Hello friends, I am Parvinder from IBSL AMBALA, India, and you are watching my YouTube channel, that's Parvinder Guru. This is my writing class. In this I am going to work on the reported ideas. That how we can make a simple sentence into a reported one. Right. Again I am repeating my words. In this writing class, I am going to work on the reported ideas, that how a simple sentence we can make it into a reported to get 7+ band. And these kind of sentences in your writing task too, you have to write at least 10 according to me. How much you will write, you will get it. Right? Because in my videos, I always put stress on the basic things, because if we understand the basic, or we can say the sentence structure formation of the sentence, naturally we will get the required band. So this is on the reported, and I have taken here 3 examples. First is, this is a common sentence, mostly you people also write. The sentence is just in front of you. That's newspapers report that government measures on household recycling are imminent. So what I have to do here, I have to make it a reported idea. So how can I work? First of all, this one, that is newspaper report, right? I will delete newspaper. So I will not write it. Fine. Second, I will not write that. So after that, I have seen government measures, right? These 2 words are written. So I'll do one thing. I will start my sentence with this word, that is government measures. Why I have taken this word? Because it is after that, right? It means there is some kind of dependence, and the main function is going on the government measures, or I want to say that I am going to make it my subject here, right? This line is same on household recycling. Up to here I am same. Now R is there, so we can also say that it is going to become a kind of cleft also. So here it is written report. So what I'll do, R, I'm not going to write this word. After R, I'm going to the report word, that is reported. Fine. Now I have to write this also. So there is introduction of these 2 words to be, this is left here, imminent. So thing is that newspapers deleted, report changed into the reported one, that deleted, government measures, right? The sentence is now, it is started with government measures on household recycling, same language, are reported to be imminent. So this kind of language try to make, this language is known as reported language. Fine. So that's why I have taken a kind of example related to reported here. Now next, many people now see air travel as the biggest threat to the environment. I am agree. Again, many people now after that see then air. So I am going to start. So how can we practice this one? You can do in your at your home also, wherever you are taking coaching or any place. What you have to do, write a simple sentence, then after writing simple sentence, try to make it into reported one. Okay, so this work you can do anywhere. So this kind of practice when you will do, so you will become familiar with this kind of sentence formation. So here I am going to start with air travel. So this is my start here, because these are the hidden reasons which I am going to discuss with you, why the people are not getting
mostly a nice band in writing. So there may be a kind of reasons. So that I have traced myself, and I am trying to put those reasons in front of you. So here air travel, it's okay. Now I have to make it a kind of reported. Is fine. After is, I'm going to now present form. After now, I have to add one word here. If you remember the word, these kind of words for reported sentences I have given in my previous videos also, just like you can say that widely, commonly, generally. So why these words? Why have used? Why the widely used here? What's the reason here? Because I told you that I will delete many people. When I am going to delete many people, so I have to find an alternate word for it. So here the alternate word is commonly, widely, generally. So air travel is now widely. Fine. So up to here, so widely is used to delete many people here. So you can write widely, commonly, generally, right? And we can write other words also. Sometimes for everywhere we can write universally word also while going with the reported ideas. So here is now widely. After is, I have to work on this word, that is seen. So air travel is, that's my addition here. Now with now, widely addition, seen. Now what is left here, that I will write as the biggest threat to the environment. So this is now reported one. So this is a difference between a simple sentence and a kind of complex sentence. So let's go to the next one here. A lot of people, naturally I will delete this one. Believe, I will keep it with my sentence that in the shape of believed, that I'll delete the recycling of this plastic. 1 point. Now I have to start my sentence after that. It means I will write here the recycling of plastic. Now break, this is written here. Fine, start is there. Then I am going to introduce, it means you can check here, this is simple present tense in the same form. In the previous example also simple present was taken, right? So simple present, so I have to introduce, in this case is, it's okay. So I have added is here. Now I'll write 3 words I have. So I'll write for the people here, that is commonly. Fine. So it means this is going out of track now. And check it please, previous example also is commonly. Up to here I have done my work. Now what I have to do, instead of believe, it is going to be believed. Now to be, there is no to be here. So these are new words, 2 words, right? Then the same language after is too costly a process. So these are 3 examples which I have done in my writing class related to reported ideas. So you can do practice by yourself. If you check any newspaper, you can say that editorial page, you will get this type of language also by some of the writers, they try to use. Even if you can get this type of language in your reading passages also by some of the writers. So remember this thing. So what I have done with you,
and you are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru. Please subscribe this channel, comment, like, share my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru. Thanks for watching this video. Now I am going to in Hindi version. आप देख रहे हैं परविंदर रंधावा गुरु YouTube चैनल, और जो मैंने यहाँ वर्क किया है वो मेरा वर्क है कि हम एक कॉमन जो सेंटेंस लेते हैं उसको कैसे हमने रिपोर्टेड बनाना है। तो मैंने एक एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में लिखा था, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट मेजर्स ऑन हाउस होल्ड रिसाइकलिंग आर इमिनेंट। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर को मतलब इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट वो है वर्ड है, मैंने उसको डिलीट करना है, राइट। न्यूज़पेपर्स को, इस वर्ड को मुझे रखना है, लेकिन इसके साथ मुझे ईडी अटैच करना है, दैट मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट से, मैंने मतलब इसका मतलब जो दैट के बाद मेरा वर्ड था उसको मैंने सबसे पहले लेके आना है स्टार्ट पोजीशन पे। गवर्नमेंट मेजर्स को मैंने यहाँ लिया, ऑन के साथ मैंने ऑन रखा, हाउस होल्ड रिसाइकलिंग को हाउस होल्ड रिसाइकलिंग के साथ रखा, आर को यहाँ से उठाया, राइट। रिपोर्ट की जगह मैंने ईडी लगा के रिपोर्टेड कर दिया, जो पीछे का वर्ड रह गया था उसके साथ मैंने टू बी अटैच करके अपना वर्कआउट कर दिया। सो ये तो मेरा एक फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे राइटिंग क्लास में कि मुझे रिपोर्टेड आइडियाज कैसे लेके आने हैं। जब मैं नेक्स्ट में गया तो यहाँ मुझे वहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर वर्ड था, यहाँ पे मैनी पीपल आ गया। इसके लिए एक आपको पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो राइटिंग और रीडिंग में मैंने कहा था बहुत बेनिफिट है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था क्लेम वगैरह वर्ड का मीनिंग देखा मैंने उसने लिखा है कि जब भी आपने रिपोर्टेड आइडियाज बनाने हैं, उस वीडियो में बताया है, तो आप कॉमनली, वाइडली, जनरली इस टाइप के वर्ड्स यूज करो, तो आपकी मतलब कि आपको पता लगेगा कि राइटर के व्यूज क्या है और अपनी राइटिंग भी इंप्रूव होएगी। और इस टाइप के जो ये हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं आप बड़े इजी कर सकते हो। आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हो, उस सेंटेंस को जब फॉर्म कर लेते हो उसके अंदर से फिर रिपोर्टेड वर्ब बनाओ, ठीक है, रिपोर्टेड आइडिया लो और उसको बना के आप क्या करेंगे, कम से कम अपनी राइटिंग टास्क 2 में ट्राई करना 10 लाइन 5 लाइन्स ऐसी लिख के आनी है आपने, राइट। और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉपी पेस्ट कि कॉपी पेस्ट कुछ करे या कहीं से आइडियाज ले, ये वर्क करके देखिए आप। सो मैनी पीपल नाउ सी एयर ट्रेवल एज ए बिगेस्ट थ्रेट। तो एग्जाम्पल लिया गया हमारा यहाँ पे एयर के साथ एयर, ट्रेवल के साथ ट्रेवल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, नाउ के साथ नाउ, ये फिर इंट्रोड्यूस हुआ, ये पिछले वाले टिप से आया है, वाइडली सीन एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, बिगेस्ट थ्रेट के साथ बिगेस्ट थ्रेट। इसका मतलब यहाँ पे डिलीट किया हुआ मैनी पीपल आपका आउट चला गया, ठीक है। टू बी यहाँ नीड नहीं थी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर थी, तो टू बी लगाने की नीड नहीं थी। जो अगला गया एग्जाम्पल, दैट इज लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज टू कॉस्टली ए प्रोसेस। लॉट ऑफ पीपल को मुझे डिलीट करना है, बिलीव की जगह बिलीव्ड बनाना है, राइट। और दैट द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, अब यहाँ पे दैट के बाद वाली मुझे ये द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक मिल गया तो मैंने इसको पिक कर लिया। इस मैंने क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो इस यहाँ से भी ले सकता हूँ, इंट्रोड्यूस भी कर सकता हूँ इस, और इसके लिए मुझे क्योंकि डी बनाना तो मैंने जो लॉट ऑफ पीपल की जगह मैंने कॉमनली ले लिया वर्ड, वाइडली, कॉमनली, जनरली, तीनों वर्ड चल जाएंगे आपके। जैसे मैं अभी बता रहा था कि एवरीवेयर की जगह आप यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने माइंड को मतलब कि उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए कि ये वर्ड्स की जगह मैं ये वर्ड चेंज कर सकता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉमनली बिलीव के साथ बिलीव्ड हो गया, टू बी टू कॉस्टली ए प्रोसेस। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने करे इस वीडियो में, जिसमें हमने ये आइडियाज लिए कि रिपोर्टेड जो आइडिया है वो कैसे वर्कआउट करना है। आप देख रहे हैं परविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आइल्स के ऊपर और दूसरे इंग्लिश टेस्ट के ऊपर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सो हमेशा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और एक चीज़ और है कि राइटिंग में यूज़ योर ओन व्यूज़, ये मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। If you do any kind of cheating, if you do any kind of means taking your, because they have written here, use your personal examples, right, or use your own ideas. So don't take the ideas of another one.
And the main thing is that writing is always from a, you can consider a kind of concept which is going in the environment. राइटिंग वहां से ली जाती है जो इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो आपको कभी नहीं लगता कि आप कोई ऐसी राइटिंग कर रहे हैं जो बाहर से आती है, जो एलियन राइटिंग है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट से होती है, बस थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करिए, नेचुरली यू विल गेट नाइस बैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।